Jai Hind, good evening. Welcome to our Tuesday live session of YouTube. Kindly keep posting your questions and someone kindly confirm that I am audible. Thanks, Sachin. Okay. Before I start answering your questions, few tips from my side, which I keep repeating always, but they are worth repeating because there's so much of junk which is spread through coaching academies and websites and other sources. So it is important. You see, thing is, when the selection system started working, there were no coaching academies, and people still got selected. And the criteria for their selection remain exactly the same what they were when the first SSB ever took place. So without having access to any coaching, these people did get selected. And they were selected because they were meeting the criteria of being selected. Now, these coaching academies which have come up, the numerous coaching academies, what they have done is the only sensible thing they have done is they acquaint you with the SSB process, which, in my view, can maximum take 1 day or, I mean, few hours, I would say, or maybe 2 days at max. But they have devised their marketing strategy around the 15 days coaching capsule or something like that. So, what happens in this? There is 2 days of worthwhile information in which you get acquainted by the SSB process. And in the balance 13 days, you are misguided. And the misguidance is of such a magnitude that the aspirants feel that focus on the SSB process is the key to success at SSB, which is a falsehood. The key to success at SSB is your holistic personality development. Recently, I've started running capsules, sort of, boot camps, we call it, 6 days. And the only thing which I feel I am able to achieve in that 6 days of boot camp is that I am able to declutter the trash from the minds of the poor aspirants. Misguidance which they have got. So if you take the analogy of Ludo, it's a popular game for kids. So your dice is, I try and bring it from negative to zero, not positive at all. Nothing, not one, two, three level. No, no, nothing. I try to bring it at zero. If you had received no misguidance from these various sources. Now, having worked in the selection system and guiding students for almost 11 years now, I have realized that in case you people focus on the following four things, you can increase your chances of selection considerably, as also success at life in general. The first and foremost thing, your academic competence in case you are a student of your core subjects. I give it a weightage of 35%, that's the most significant. And in case you are a working professional, then this weightage of work knowledge substitutes for your academic knowledge because whatever you have been doing in the recent time. So that's one. Then comes your ability to communicate. So communication skills, I give it a weightage of 30%. Next comes your physical fitness, I give it a weightage of 20%. And general knowledge takes a weightage of approximately 15%. So if you focus on these four things,
you can greatly increase your chances of success in life as also SSB. Fine. Thank you. Now we'll take your questions. Yeah. So let us see. स्क्रीनिंग इन सीक्रेट 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 कुछ नहीं है मिलियनर भाई साहब I have posted a video on our YouTube channel and has been posted long back. It is there on our website also. Kindly search it out. It is less than 20 minutes. Watch it. It is a pretty comprehensive thing. It will clarify everything to you. So those are the things which you should observe. Fine. Kindly watch it. It will do you a lot of good. I would not like to repeat those 20 minutes here now because time is at a premium and it's already there. Fine. Thanks. Captain Nilesh. Oh, thanks. Graduated in 24 summer. I'll be अच्छा कैप्टन साहब है नहीं असल में ओके ओके नाम बना रखा है I'll be appearing for SSB next year October through SSC Tech. फाइन तो ये चार चीजों पे ध्यान रखिए कैप्टन साहब असल में भी कैप्टन बनिए फिर इन ड्यू कोर्स आई वुड सजेस्ट डोंट बैंक ऑन दिस एसएससी टेक ओनली डू प्लान टू राइट दीज रिटन एग्जामिनेशन फाइन to increase your chances of being selected because academic knowledge is important and the chances of getting screened in through these AFCAT and CDS entries are higher vis-a-vis your SST Tech entry. Right? So this is my advice to you. Oh, thank you. Trophies बहुत है ये दे देते यार क्लब क्लब वाले ना when we play and I mean this was one suitable place my wife found के इसको इधर इधर लगा देते तो that's why they are there. Right? That is what it is. Captain Nilesh, I am working as of now. How do I showcase my skill? भैया showcase वोकेस करने के चक्कर में मत रहो छवि बिल्डिंग का काम एक मोदी साहब ने कर करके दिखा दिया आपको कैसे इलेक्शन में भी फर्जीवाड़ा किया है नहीं तो इलेक्शन खुद भी नहीं जीते होते और ना उनकी सरकार बनी होती ना प्रधानमंत्री बने होते तो शोकेस वोकेस करने का चक्कर छोड़ दो अपनी जेन्युइन एबिलिटीज इंप्रूव कर लो ठीक है ना आप काम कर रहे हो तो बी अ गुड वर्कर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश फिटनेस जीके दैट इज व्हाट यू शुड डू फाइन सो दैट्स इट या थैंक यू शिवम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नेगेटिव पॉइंट अरे कॉम्प्लेक्स तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव ही होगा जनरली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और होता नहीं है कॉम्प्लेक्स होता इंफीरियोरिटी है वो इंफीरियोरिटी जिसमें होती है वो दिखाने के लिए ना वो यू नो द पर्सन ट्राइज टू क्रिएट दिस इमेज ऑफ यू नो सुपीरियोरिटी एंड ऑल दैट वो होता नहीं है सुपीरियोरिटी जनरली अंदर से वो इंफीरियर ही फील कर रहा होता है fine like all bullies are basically cowards fine so that's what it is okay इससे फायदा कुछ नहीं हो सकता बैलेंस सेंसिबल रैशनल आदमी होना चाहिए वो ठीक ओके हाउ टू फिक्स इट फोकस ऑन रैशनैलिटी यार जितना आपका है उस हिसाब से चलो नाइदर इंफीरियर नॉट सुपीरियर फाइन या यू कैन जॉइन आवर गाइडेंस प्रोग्राम तो आपको और क्लैरिटी मिल स्वीट 16 काफी आता है हमारा ये अटेंड करने के लिए SSB will be in 26 okay I want to join the guidance program but before that tell me how you will be operating अच्छा अभी तक तूने पता नहीं कि इतना सेशन अटेंड कर लिया अरे मेरा वेबसाइट में जाके पढ़ कुछ एफर्ट कर तेरे को पता चल जाएगा ठीक है ना तो सजेस्ट तो ये है मेरा कि आप गाइडेंस प्रोग्राम आप भी ज्वाइन कर लो एंड ज्वाइन लॉन्ग टर्म सो वंस यू डू दैट तो आपको ओवरऑल जो है बेनिफिट मिल जाएंगे ठीक है दैट विल बी माय सजेशन टू यू फाइन बाकी हमारा वेबसाइट में जाइए उधर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो देयर नो प्रॉब्लम एंड हमारे यूट्यूब चैनल में भी वीडियो डाला हुआ है कि यू ज्वाइन जब आप करते हो तो क्या क्या आपको मिलता है ठीक है which program Piyush wants to know which program is appropriate from whom okay fine this is a valid question you see somebody who has a serious problems with English or is grossly overweight say 15-20 kgs so
Such things will definitely take plus of 6 months to resolve. So, such people, I advise that you take on the long term guidance program. For balance, the medium term guidance program is okay. शॉर्ट टर्म गाइडेंस प्रोग्राम जो हमने पी पी और ये जो किया हुआ है actually we have done it, I'm not very fond of these programs. We have done it because some people they are very stuck up, for whatever reasons, because of the misguidance from the society and various sources they have. They feel कि बस एक मॉक इंटरव्यू हो जाए तो उससे काम हो जाएगा, वो होता नहीं है. But that way, I try and do my best in two interactions with such people. So that is what we have done. So the right thing to opt for is either the medium term or the long term. So this is what it is. Fine. Yeah. Thank you. अंजलि recently got conference out. तो अंजलि जी आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा प्रोग्राम. Will help you improve overall and to increase your chances, improve your competence overall, and increase your chances of success at life and also SSP. Right? तो ये है. आ जाइए, बैड लग रहा है, अभी ज्वाइन करिए हमारा प्रोग्राम. शिवम, what was your personal reason to join armed forces? हमारे टाइम में शिवम थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, See, I have joined NDA in 1979 January. Those days, job avenues were not very many. I was in a good school, and my academic competence was fairly good, and I was a good sports person. And my parents were lawyers, so I was not immediately in my family that thing was not there of forge. But some of my classmates were children from service defense people. Right? So through them, what I could gather is that life at NDA was somewhat kind of an extension of the life at school. Because balance, we learned that college, if you go sports games and all have got hardly any significance. So NDA, I learned that physical fitness, athleticism, games and all have important. So this is what I liked. So that was one reason for going to India. The other reason was that it was the earliest opportunity available to get a secure job and get trained and get a good graduation degree from a premier institute at government expense practically. So a combination of all these reasons were there for me to go and join India. So that is how it was. Fine. Yeah. Thank you. Rahul, does academic competence mean that you should have knowledge about? अरे भाई इसके ऊपर कितने वीडियो, कितने अभी एक रिसेंटली वीडियो राहुल बोरा जी मैंने डाला है, एकेडमिक कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है उसको सुन लो भाई. हाँ? अच्छा. BSc 10 plus 2. Currently, I am preparing competent and I have forgotten whatever I studied in school of BSc. Okay. See, Rahul, I'll be very frank. You have been an absolutely lousy student, fine? That you are very proudly proclaiming कि 10+2 में जो तुमने पढ़ा था और BSc में पढ़ा था वो सब कुछ आप भूल गए हो. मैं साला अभी तक नहीं भूला हूं. मैंने बीए किया है. मेरे को न्यूटन की लॉ भी पता है, मेरे को आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पता है, मेरे को बर्नौलीज की थ्योरम भी पता है, और मुझे केमिस्ट्री सेमिस्ट्री भी जो मैंने पढ़ी थी. एंड मैंने 12th किया ही नहीं. आई स्टडीड ओनली अप टू 11th. आई स्टिल नो दीज थिंग्स. So this argument of yours, which you are giving very confidently, is absolute bullshit. Fine. So get your ideas clear. The fact is that probably you never understood. You mugged up something before the exams and you vomited it out and you got some marks. And this is pretty popular in our society today because I've been interviewing mostly engineers
uh, 2 years in the selection system and 11 years now, so around 13 years. And I know that more than 95% of the engineers produced by the Indian society know junk. They fuck all they know about their engineering subjects. So they wasted their 4 years in engineering. So you have wasted your 2 years in 12th and your BSc. Fine. So that is the truth. Please register that. Get it embedded in your bloody head. And now get focused and start understanding things for a on a permanent bloody basis. Fine. तो जो आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो उसको ढंग से पढ़ाई करो नहीं तो यू विल गेट किक्ड आउट फ्रॉम एसएसबी डेफिनेटली फाइन तो दैट्स इट या थैंक यू प्रथमेश नेसेसिटी 12 तू 5 ही लिख के आ जाना तो रिजेक्ट हो जाएगा और क्या है तो पर कष्ट क्या है तुमको तुमको 4-4 मिनट बड़ी मिल रहा है लिखने का लिख नहीं सकता वहां पे भी तू एनर्जी बचा रहा है अपने घर में भी एनर्जी बचाता होगा स्कूल में भी एनर्जी बचाता होगा कॉलेज में भी बचाता होगा वहां पे भी जाके एनर्जी बचाएगा कि WAT में 60 में से चलो यार 40 ही कर देते हैं SRT 35 ही कर देते हैं और स्टोरी भी 8-10 लिख देते हैं बहुत है your attitude will get you rejected 100%. My advice to you would be to do each and every bloody story, write each and every bloody word in the sentence, complete your entire booklet of SRT, do 60 पूरा ठीक है ना दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग टाइम बचाना और एनर्जी बचाने के चक्कर में तो यू शुड डिजर्व टू बी किक्ड आउट दैट इज व्हाट इट इज फाइन डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस बड़ी बकवास एजेंडा शुड बी दिस बाकी तो जो होगा देखा जाएगा कहानी पूरे नहीं लिखेंगे एनर्जी बचा लेंगे Physics with SJ. Sir, I got consoled out from the very first time and now I'm in my college going for NCC best cadet. कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे NCC best cadet, तेरा RD camp कुछ नहीं होगा, इससे कोई भला नहीं होगा. You will waste lot of time. I would advise ये RD camp के लिए मत जाओ. अपनी पढ़ाई छड़ाई जो 4 चीजें मैं बताता हूँ उन्हें सुधार लो तो सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे. ये बड़ा ग्लैमर स्लैमर लगता है कि बड़ा बिग डील है RD कैंप अटेंड कर लिया बड़े चौड़े होकर घूमते हो ये है वो है बकवास इट विल गिव यू नो ब्लडी बेनिफिट फाइन दैट्स माय एडवाइस ओके तो फिजिक्स वाले का हो गया जवाब जेलस जियास since being from army background being in NCC chalo you wasted time in NCC and all one thing corporate needs to learn is brotherhood okay I found it hard but yeah being adapted is the way to go fine yeah that's right adapt to karna hai but you see the camaraderie which we have in the different services is a good thing. And that kind of spirit can be generated or created in the organization where you work. Fine. Try and do that, it'll work out good. Oh, fine. And I know cultures get created top down. So when you become a little senior, you can try and do that. It'll be a good thing. Okay. Bhushan, what do you think about the Indian startup? No, any startup, anybody who's starting a new thing has got courage. Entrepreneurship requires courage, confidence. तो एबिलिटी होना चाहिए करना चाहिए स्टार्ट ठीक है ना तो दुनिया में कहीं भी हो यहाँ भी करो सेंसिबल आइडिया है ज्यादा बड़ा रिस्क मत लो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड गो अहेड एंड डू इट इट्स एक्साइटिंग इट्स it's a good thing to go ahead with. Like I also started, something very late in life. This is also a startup, No Frills Academy. तो रिटायरमेंट के बाद मैंने किया है तो ठीक है इट्स गुड यार वर्किंग फॉर योरसेल्फ इज अ गुड थिंग लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज देयर आई फाइंड इट्स वेरी सैटिस्फाइंग so I'm sure you will do that. If you have to you add value to society, that's good. I feel very good about having the success. I think of around 650 हो गया होगा अभी तक सक्सेसफुल लोग एंड इवन जो सक्सेसफुल नहीं हुए एसएसबी में there's so many of them who have improved in their lives and are doing well in their careers. So these are all good things. I just had one student, he came, he was my student 4 years back.
and now he's working as a sports teacher, also taking classes. He teaches science, maths to students. Also runs a basketball academy. He came and met me. He said, "Sir, it was very nice. You know, whatever we guidance we got from you, that helped me take on these ventures, and I'm doing very well for myself, and I'm pretty successful." And he also told me that two of his students they cleared NDA and they have joined based on the advice he gave them. Right. So this is how life is. Yeah. Akshat. Jai Hind, Akshat. God bless. Sir, I'm a type of person who always seeks to win every game in championship, but some of my mates say that in every eccentric person for how to deal. You don't get bothered, you don't have to deal. Yes, you see, so long as you are working sincerely to win every game and every championship by ethical means and not bending rules, which are quite popular in Indian society, then there is just no problem, and you don't have to bother your minds at all about public opinion. Chavi building, I said, it's a stupid idea. Don't bother about that. Not needed. Aditya, I have worked in a BPO for 1 year in hotel, and then I shifted to a remittance company where I'm working for last 3 months. I have a salary of 45K. How many questions? Yeah, nah, I love this question. Now, the Kunji masters now throughout life, Kunji के जो है इधर भोपाल के इस एसएसबी में ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर एग्जैक्टली क्या पूछेगा, तो मेरे को दुनिया में जानकारी लेने का कोई डिजायर नहीं है। मुझे खाली ये बता दो वो एग्जैक्टली क्या पूछेगा कि उसका बेवकूफ बना के मैं रेकमेंड कर दूं। भैया इस अप्रोच के मैं बहुत खिलाफ हूं, बट ये हमारी सोसाइटी का बड़ा पॉपुलर अप्रोच है। मेरे पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं, तो आई विल नॉट गिव यू आंसर। आपकी नॉलेज जो है अपने काम की अगर ठीक से जानते हो तो नो बड़ी प्रॉब्लम, और नहीं जानते हो तो आइदर वे इट विल गेट नो। मैंने इन्फेंट्री यूनिट कमांड किए, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। मेरे से आज भी अगर आप इन्फेंट्री के बारे में कुछ पूछो तो जो चीजें वैलिड होगी मैं आपको बिल्कुल बता पाऊंगा, और अगर मैं नहीं बता पाता हूं तो इसका मतलब मैं बेकार इन्फेंट्री ऑफिसर था। दैट इज व्हाट इट इज। Yeah, and I don't need to find out from any कुंजी कि कोई मेरे से क्या सवाल पूछेगा, ठीक है ना? ओके, फिजिक्स फिजिक्स सर, आई वाज एक्चुअली ओवर मैच्योर। अच्छा, नहीं भाई, ओवर मैच्योर हो गया, तुझे पता भी चल गया कि तू ओवर मैच्योर था। वेरी गुड। आई वांट टू नो वेदर। अरे मेरे भाई, अकल तेरी अच्छी है तो इट्स अ गुड थिंग। ये बकवास लोग करते हैं, और तेरे वेदर की स्पेलिंग ठीक नहीं है। ये वेदर की स्पेलिंग जो मौसम विभाग वाला वेदर नहीं होता, ठीक है ना? तो इतना तू मैच्योर भी नहीं हो गया, तेरी अंग्रेजी तो डेफिनेटली सुधरने की जरूरत है। हाँ, तो फिजिक्स तू बेसिक पढ़ाता होगा एसजी में, एसजे में, तुम मेरे पास आ जाओ तो तेरी अंग्रेजी में सुधार दूंगा, ठीक है? ओवर मैच्योर बड़ी बकवास आइडिया था ये। हमें अकलमंद लोग चाहिए फौज में, बेवकूफों की जरूरत थोड़ी है फौज में। अच्छा, अम्म, अच्छा, Saurabh Veer. I am giving service at hospital as staff nurse and want to join forces because I admire my brother who is in Navy. Good thing. Good thing. That's an inspiration. Do work systematically, work hard, do your job well. I know this nursing duties and all, they were very tough jobs, but they teach you a lot. Teach you a lot. They teach you empathy, work ethic, so many things haven't you done through that. I mean, I can't really say because I haven't done this job, but I've seen people doing this job. It's a tremendous job. It's a very, very satisfying job. Do good at that job, become a good person, improve your skills and knowledge, as I have said, and wish you all the best. You get it. Fine. Akshat.
I got a TR for bilateral substandard hearing after 25. I had a cold during my audiometry test and the TR. So I'm from Dehradun. So I tested it and even with my flu, I had normal PTA टेस्ट बेटा मेरे को इसकी जानकारी नहीं है वो तुम जो है ना ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही पूछ लो वो आपको सही जवाब दे पाएंगे मैं आई वुड नो ना ठीक है ना मुझे इतना पता है कि मेरा ऑडियोमेट्री टेस्ट की मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा सेलेक्ट जब हुआ था तब तो ठीक ठाक होगा एट दिस स्टेज इट इज बैड ओके शुभम कुमार सर आई एम नॉट न्यूट्रल अबाउट एनीथिंग मीन आई प्रेफर टू स्पीक ट्रूथ तो मेरी बड़ी अच्छी बात है यार लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि रूलिंग पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना बट मेरे से नहीं होता मैं सीधा गलत को गलत सही को सही बोलता हूं। तो बहुत अच्छी बात है यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ एट ऑल टिल यू गो टू योर ग्रेव आई एम टोटली विद यू एंड आई एम माई सेल्फ लाइक दैट I believe in speaking out my mind, and I find this. I'm not exaggerating. I call this Modi and Shah's Billa Ranga. They're criminal gangsters. They ruined this country, and they deserve to go to jail. Right? So that's what it is. And with the recent thing which has come out, that election, mein how they manipulated, which is they come out with Rahul Gandhi has come out with the evidence, and now more evidence is coming. If they had any shame, which they don't have, they would have resigned, but they will have to be kicked out. Right? So that's what you and I, as good citizens of this country, will have to do. This is like again the freedom movement, like we removed the British Raj, now we'll remove this Modi, Shah, Adani, Ambani Raj. Okay. Getting very anxious, we'll have to repeat the medical process. वही भाई इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता मेडिकल शेडिकल में क्या वो होगा एंग्शियस एंग्जाइटी का इलाज मेरे पास इसका कोई ऐसा है नहीं ठीक है ओके Sir, you missed my Thanksgiving. I'm sending it again. You deserve the praise. Oh, thank you so much. So much. My apologies that I missed. Thanks a lot. God bless. Chillers, yes. I am an ex-NFA student. This time it's my last SSB, but excluding defense, you opened up my vision. Now I'm in a corporate doing really good. Now my vision has changed. Thank you so much. That's great. Please keep doing well. God bless. Keep doing well. Things should work out. Oh, you written more. You really taught me about life. You may not recognize it, but you did to me. And I'm very much thankful to you. Nowadays, I go out for workout, then office, then upskill. Cheers, buddy. Cheers. Good. Prepared for company, new company. Good. God bless. You energize me by your words. So I'll exercise with greater vigor tomorrow morning. Thank you. And so also you should do. Right? That's revenge buddies, NFA. Once you are in NFA, you always be an NFA person. Once Bajpayee, I'm in class 12. My NDA exam is on 14th September. I'm pretty confident of getting it good. What can I do to prepare for SSB? Your clearing of the exam itself is means 35% of the job is done. Thereafter, work to improve your English, work to improve your physical fitness if you are already not doing it. Because you suddenly can't change your physical fitness. And then your GK. Fine. So that is what it is. Okay. Wish you good luck. Do well. God bless. Shivam, I have also same tone as you. Top say the truth in face. But people say it's a way too blunt. Let them say, don't bother. लोग कहते रहते हैं, don't, we have to ignore them. Nobody knows the perfect way of living, and God has created each one of us as unique human beings. We should try and contribute to the society in the best manner possible. We have got our conscience and our rationality. Let's use it, and that's it. Shivam is thanking you all the words. Appreciate that. Thank you, beta. God bless. Aditya. I have very good knowledge of my job. Excellent. Excellent thing.
दैट इज योर बेसिक फाउंडेशन, मजबूत है आपकी। अरे चिंता ही मत करो कितने जॉब कितने एकेडमिक, एकेडमिक वगैरह से कम ही होगा। बिकॉज थिंग इज दैट यू सी वी आर ट्राइंग टू असेस एज टू हाउ यू आर एट व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आप एक काम करो, आप मेरा बुक पढ़ना ना, दिस बुक, द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। फाइन, काइंडली गेट होल्ड ऑफ दिस बुक, रीड इट। इसमें आपको एक स्टोरी मिलेगा, वन ऑफ माय स्टूडेंट, अजय सिंह राजपुरोहित। Ajay Singh Rajpurohit was a lousy student in engineering, like so many others. But he was worse than the average lot. So, what people take 4 years to pass without knowing what is there, he had taken 6 years to pass. So, he also did not know what is there in mechanical engineering. But he took 6 years to pass and he has some about 25 backlogs. So, he was an absolute casual and lousy student. Thereafter, he worked as a general manager of a restaurant, and he did a good job of it. And for about 5 months, we were interacting. He continued doing a good job of managing the restaurant, which is a taxing thing. And along with that, he improved his academic competence to clear the OT written exam. His communication skills, they were not bad. Communication wise, English was okay. So improved little bit, improved general knowledge, physical fitness also was not bad. It was okay. He improved further and he got recommended. Fine. And he is an officer now. उसकी कहानी पढ़िएगा, हाँ? So that's what it is. Okay, Aditya. So let's move ahead. हाँ, आर्यन सर, क्या नॉलेज वाले क्वेश्चंस का आंसर असेसर का बाप बने बिना तुम्हें तसल्ली नहीं। मैं आप किसी हम होलिस्टिक असेसमेंट करते हैं, कोई एक चीज से डिसीजन नहीं ले लेते। देखो ऐसा है ना, जब आप एग्जाम में सवाल लिखते हो ना, तो होता है कि ये 5 नंबर का सवाल, तो इसमें 5 में से आपको 3 मिल गए, इधर 5 में से 2 मिल गए, ऐसे फिर टोटल टीचर कर देता है। यहाँ ऐसा नहीं होता साइकोलॉजी टेस्ट में कि ये पहली स्टोरी लिखी तो इसके जो थे 5 नंबर थे, तो 5 में से 3 नंबर, अगली स्टोरी में 5 में से 2 नंबर। दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज नॉट देयर कि डब्ल्यूएटी 60 में 60 नंबर थे, 60 वर्ड थे क्योंकि, तो 60 में से एक को 50 मिले, एक को 55 मिले। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज अ होलिस्टिक टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम सब कुछ देखने के बाद असेसमेंट करते हैं। फाइन, द जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, एवरीवन डज लाइक दैट। तो इट इज द असेसमेंट इज डिफरेंट। तो आप इसे इस तरह से कंफ्यूज मत करो और इस चक्कर में मत पड़ जाओ। ओवरऑल योर थिंग शुड बी योर एकेडमिक कॉम्पिटेंस ठीक ठाक होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मैं ये नहीं कह सकता कि एकेडमिक कॉम्पिटेंस का कोई जवाब ना दे पाए तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। लाइक इन द केस ऑफ अजय सिंह राजपुरोहित, he could definitely not have answered. He did not know, but his job knowledge was bloody good. He was a competent worker, and that was his foundation. So whatever you're doing, do good at that. And in the past, if whatever you've done, you have been good at that, that means you have a track record of being competent in the past, and now also you're competent. That's very good. So that's how it should be. Fine. So don't get hassled about it. अभी जो कर रहे हो उसको सुधार लो। पुराना ठीक था तो अच्छा है, और नहीं था तो अब उसको यू कांट कीप गोइंग बैक टू मच इन दैट। दैट इज द थिंग। कितना पीछे जाओगे? और इन चीजों में आपको अगर एम्बिग्यूटी है तो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, तो मैं आपको ग्रेटर क्लैरिटी दे सकता हूँ, ऐसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, या थैंक यू। अच्छा, आर्यन का था सवाल, सॉरी आदित्य का नहीं, आर्यन। फाइन, तो दैट इज इट। Shatrujit, sir, how to maintain self-discipline? It starts with motivation. All defense personnel, all sports persons,
All successful students, competent students, all competent workers have good level of self-discipline. If they don't have, they will not be good students, good workers, good professionals, or good sports persons, or good defense personnel. It's important क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन से ही चीजें होती हैं। अगर आपने दिन में प्लान किया है स्टूडेंट मैंने ये पढ़ाई करनी है और आप उसमें से 50% ही करते हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन बेकार है। तो जब आप वर्कर होगे तो वह बेकार ही वर्कर होगे। दैट इज व्हाट इट इज। इट इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए पर मोटिवेशन चाहिए टू फॉलो योर प्लान। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू। शत्रु जीत तभी शत्रु को जीत कर पाओगे ना जीत। ठीक है। ओके अतुल द्विवेदी lose my confidence while speaking English, how to improve and vocabulary. Well, time लगने वाला है। एफर्ट करते रहिए, रीड मोर, राइट मोर, स्पीक मोर, इट विल improve. कंसिडर ज्वाइनिंग आवर गाइडेंस प्रोग्राम क्योंकि वहां हम रिटन वर्क आपका देखते रहेंगे। We'll keep checking and giving to back to you. And you will be taking part regularly in group activities. We've had students who came from vernacular. अभी कमीशन हुआ है रिसेंटली भूषण मोरे फ्रॉम महाराष्ट्र यू कैन रीड हिज success interview on that YouTube channel. So it took him about I think 1.5 years or so to gain the competence to be able to converse reasonably well in English and write also. And he got selected and he is an officer today from IMA. And the first person, the only person, first and only person from his village टू बिकम अ क्लास वन ऑफिसर। तो किया सब जा सकता है। आ जाओ आप ज्वाइन करो। नहीं भी है तो ये चीजें करिए आप तो बात बन जाएगी। कुमार तेजस currently is class 12 and preparing for the written part. Pretty much confident. Very good. What thought process I should be attempting? थॉट प्रोसेस है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो एग्जाम कर ही लोगे तो एटीट्यूड आपका ठीक है कैसे मतलब क्लैरिटी होगी आपके एकेडमिक्स वगैरह की रिजल्ट अच्छा है तो उसमें मेजर पार्ट ऑफ फॉर एसएसबी इज डन। देयर आफ्टर इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए वो रिटर्न के लिए भी होनी चाहिए ठीक ठाक। देन नेक्स्ट काम जो 65% काम तो हो गया ना 35% वेटेज 30% इंग्लिश का। देन कम जो फिजिकल फिटनेस एंड जनरल नॉलेज उन पर भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए बात बन जाएगी। दैट्स इट। SP saying I'm not doing any work and done only simple graduation and evening I run and do some pull-up, push-up and only study for written. ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है कब से ऐसा काम कर रहे हो। अगर घर बैठे हो तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग रस्टेड एंड दैट विल गो अगेंस्ट यू फाइन बिकॉज रिटन की तैयारी करते रहना घर बैठ के नॉट ग्रेट फाइन। दिस इज माय एडवाइस। बाकी हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करिए तो आई विल बी एबल टू गाइड यू इन डिटेल and definitely I mean you'll get a kick from me if you're just sitting at home for over a year or more. Fine. So that's it. Physics with SJ. Sir, I'm actually a stubborn personality. Nah, and a stubborn to कोई बड़ी बात नहीं। And you will not know being stubborn. मैं stubborn में कई बार will power अच्छी भी होती है। It's not all negative, you know. ठीक है? You will not be able to judge yourself that much. So don't get overly carried by what people are saying. करिए ठीक है। Rajneesh is wishing Jai Hind, Rajneesh Beta, God bless. Shivam, according to you, what's the definition of a person who can be a part of it? There's no such definition. Anybody can be, you know, who has meets the adequacy level in the four things, major things that I tell. Rajneesh Singh Billa Ranga, yeah, Billa Ranga. उसको और क्या बोले यार। There's somebody who told me, yaar, actually, Billa Ranga should feel offended. The real one because they're far worse than them. Anyway. Advait, what would adventure be in the life of a technician? अरे छोड़ यार, definition ये वो तो कर लेना यार तो मिल जाएगा adventure। अच्छा, ये काफी सवाल है आज। Ayush Aryan, given 10 attempts, 6 conference, 4 screen out total, 5 India, 2 aquatic,
टेकन कोचिंग, आई ग्रेजुएटेड, दे वुड अप्रिशिएट एडवाइस। अब भाई तू मेरे पास आ जा गाइडेंस के। दैट इज द ओनली वन लाइन एडवाइस। क्योंकि मिस गाइडेंस बड़ी भयानक मिलती है। तेरे कुछ हो सकता है गलत चीजें कर रहा होगा तू, मेरी किताब लेके पढ़ लो, मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, यूल गेट क्लैरिटी। क्योंकि गाइडेंस कोचिंग वाली जो है, इट कैन बी वर्स देन अ पर्सन हु स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीन स्लेट। ठीक है ना? तो ये है भाई आपके लिए advice, ठीक है? ओके आयुष, श्री सूरज, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर डब्ल्यूटी? डोंट प्रैक्टिस ओनली, अपनी अंग्रेजी सुधार लो, और कुछ नहीं चाहिए डब्ल्यूटी के लिए, ठीक है? या Subhashish Panda, thank you for your guidance, and I've greatly followed your SSB videos since 22. Oh, very nice. Thank you so much. You taught me the way of life which shapes SSB, currently serving in the Indian Navy as Lieutenant with pride. God bless. Thanks a lot for the acknowledgement. Thank you so much. Wish you all the best. Physics with SJ. In my opinion, SSB is like an advertisement to join the reality is often disappointing. Well, you can have a perspective. I'll make no comments on that. Okay, Big Tree. Why do you hate them so bad? I have never seen a Modi. You started reading into or recently. No, no. Okay, okay. No, 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 no. It's not a silly question. Frankly speaking, you may be surprised. 2014, I was a Modi supporter. I knew that he had got this killings and all done of Muslims in 2002, but I thought maybe he would have improved. And I was also pretty fed up with this, uh, क्या कहते हैं, policy paralysis of Sonia and Manmohan, the later parts, right? And I thought that we need to move ahead, scope for there to move ahead. Fine. So, and I thought that probably this guy will work in the Atal Bihari Vajpayee mode with like Yashwant Sinha as finance minister. Somewhat, following the policies, finance policies, economic policies, and all similar to the Manmohan, continuation of that, foreign policy continuation of that, defense and all that similar, and little bit greater transparency, little bit more energy and all that, like infrastructure वगैरह improve, वाजपेयी ने भी किया था. I thought they will also do that, and they will bring up education, healthcare, and all that. I did not was not prepared for what these guys are doing. But by 2016, after demonetization and the false propaganda and the extremely high level of incompetence, I realized that ये तो बहुत गलत लोग आ गए भाई, इसको they have to be kicked out at the earliest. And maybe, if people had not been fooled in 2019, he would have been kicked out. And then things would have improved. Because whatever alternative would have come, they would have known कि ये जो सोनिया मनमोहन का जो खराब काम किए थे, they have to be eliminated. you know तो ये उनसे भी पीछे ले गए, रिग्रेसिव हो गए. तो इन्होंने 11 साल में देश का ना नाश कर दिया बिल्कुल यार. एंड दैट इज व्हाई पहले हम अमेरिका के पीछे दुम हिला रहे थे कि वो कुछ कर दें, अब चाइना के पीछे दुम हिलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना तो कुछ किया ही नहीं ना, अदर देन फॉल्स प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा टू रिमेन इन पावर एंड दिस बड़ी फर्जीवाड़ा दुनिया भर का. अब ये इलेक्शन का पता आपको चल ही रहा है कि इलेजिटिमेट है, प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं था, ऐसा हार जाना था, खुद ही अपना इलेक्शन हार गया होता है. Things had been fair. So these are the reasons for the way I think. Fine. I hope you get my perspective. Okay. Vaibhav Rathore, I forgot the last question of my CAQ. कोई फर्क नहीं पड़ता. There were 3 and happened 2 times. What kind of? अरे छोड़ यार, impact छवि पवि को मार झाड़ू यार. भूल गया ना, कोई नहीं यार, मेमोरी का नहीं है टेस्ट यार, ओवरऑल असेसमेंट है पर्सनैलिटी का. फाइन, forget it, don't bother. अच्छा, अतुल द्विवेदी ने झंडा दिखा दिया, चलो गुड भाई, तिरंगा आ गया, 15 अगस्त आ रही है. बट सैड पार्ट इज के जो है एक इलेजिटिमेट प्रधानमंत्री से वो एड्रेस करना होगा नेशन को. आई डोंट नो कितना झूठ बोलेगा, क्या कुछ जो वो करता है कि 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, ये कर देंगे.
और फिर जुबैर बताएगा कि इनमें से कितना सच था, तो 90% झूठ ही निकलने वाला है। ओके, द अनबॉक्सर सर, Kharga core is based in my hometown, fine. And since my childhood I've been seeing it and the soldiers, and I really want to command here. Is this a good reason? Yeah, why not? It's good. Why not? Why not? It is there. ठीक, so there's no problem in that. Shivam, there's no backup plan of mine means no second plan. I understand that. It's more like if armed forces, then only armed forces, either as an officer or as a pipe, I will only change if I get medically unfit. I would say, I mean, if this is your outlook, well, so be it. I mean, but I would advise do have a backup plan. क्योंकि फौज में इन होने में देर कैन बी सो मेनी इम्पॉर्टेंट ना, मेडिकल इशू भी एक है जो आपने बताया, हो सकता है कुछ हो इशू, तो व्हाई हैव ओनली वन प्लान? नॉट अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू। बाकी तो मर्जी आपकी, आपकी जिंदगी है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड व्हाट आई थिंक अबाउट दीपांशु, व्हाट टू डू केयर इन प्रेजेंट इन सेल्फ एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट में यही बोला ना अपना, कि पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटेंस अपना अच्छा करो पहला, फिर अंग्रेजी, फिर फिटनेस, देन जीके, इन दैट ऑर्डर। इज दिस व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू आस्क दीपांशु? दिस मैं ऐसे समझा रहा हूँ। Ayush RN, does regular practice of psychology? Not at all, not at all. That's a bullshit idea. This is bakwas created by coaching academy. Not needed at all. मेरे को पता ही नहीं था जब मैं गया कि SRT और WT भी होता है। आई डेंट नो ओनली, तो प्रैक्टिस क्या करना है। Atul thanking me. Will check out. Good, Atul. God bless. Do it once. Can you take my interview after clear my? So you join our program. That's all right. Just like that, I can do. Fine. Sri Suraj. Sir, I really need to join forces, but while I'm getting screened in and staying in SSB, I get self-doubt whether I'm capable. I know it is bad, but still how to go? No, anxieties are there. Whenever anything, the result is important to us and it is uncertain, then anxiety does come in. What you can do is focus on the things at hand, what you're doing, and focus with full energy on the preparation that you're doing in day-to-day life. So that will build your confidence. उससे एंग्जाइटी थोड़ा कम होगा, और वहां पे जाके जो काम कर रहे हो उसके बारे में ध्यान दो, रादर देन के रिजल्ट क्या हो। So that's what I mean. Easy to say than do, but try and do that. Fine, that's it. We are human beings. This problem is there. I mean, I may have been facing it. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, ठीक है, but it can be reduced in this manner. Okay, Avnish, there won't be 6 day boot camp anymore. I don't intend running any 6 day boot camp now because the CDS AFCAT exams are pretty proximate now. People are busy preparing for those. And after the exams, the enrollment number for my, medium long-term programs increases. So I'll not be able to spare this kind of time. I will think about it now, something like maybe February or so, when the workload overall for No Frills Academy reduces. Fine. So that's the tentative plan. अभी नहीं करने का plan. Okay. Kuvar Utkarsh, sir, should I participate in command level debate competition? Wouldn't hinder my school regular part? देखो यार, कहीं भी जहाँ पे जाके ज्यादा ताम झाम और टाइम वेस्टेज है ना, फ्रिल्स वाली चीज है, वो ना कर लेना सेंसिबल है। दैट्स माय व्यू। बाकी आप अपना देख सकते हो। दैट्स व्हाई द पर्सन सेड रिपब्लिक डे कैंप कर लूं, ये वो बड़ी बात है। आई सेड बड़ी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये है, क्योंकि अगर आप कमांड लेवल डिबेट कंपटीशन के सेलेक्ट हुए हो तो आपका लेवल तो ठीक ठाक है ही। अब उसमें जाने में ये वो, अगर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो करना ठीक है नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो देन इट इज वर्थ इट। यू विल हैव टू टेक इट, या। थैंक यू।
Understand and explain, sir. Do you believe in permanent महाराज? मुझे ये परमानेंट परमानेंट अच्छा ओके ओके is परमानंद is the one नहीं आई थिंक दैट चैप इज योगानंद जिसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो लिखा है ये परमानंद वो अभी बहुत सारे वीडियोस में आते हैं अभी आते हैं अच्छा आई हैव अच्छा I have not heard of this Osho. I don't subscribe to. I have been in Pune also. My mother was quite a follower of Osho's teaching. तो मैं कोई खास वो नहीं हुआ बट ये जो है अभी कई जो बड़े बड़े फैड में है ये श्री श्री रविशंकर और एक वो सदगुरु जग्गी एंड ऑल दैट आई कंसिडर देम एब्सोल्यूट rascals and liars. Everybody absolutely use this guy. I don't believe in them and those who follow them I consider them as having low IQ. Otherwise they should not be following these fools. Okay, बकवास करते हैं लोग जग्गी मुग्गी. Also the Shri Shri Ravi Shankar. Okay. Rohit Raj. So if you said one should maintain physical fitness, I'm doing that. Good, very good. But have a dilemma regarding the necessity of indulging in first class sport. पर ठीक है तो ना करो उसमें क्या है टाइम बचा लो फिटनेस ठीक रखो so that's it. Fine, yeah, thank you. Shivam, I'm joining a well-known SSB coaching just for the exposure. What really happens in this game? What do you think I should do or make? देखो भाई ऐसा है जिंदगी आपकी लाइफ है ठीक है ना आप उससे करना चाहते हो बड़ी रिप्यूटेड में चले जाओ आप चले जाओ उसमें आपको वर्थ वाइल नॉलेज वो यही है कि एसएसबी का प्रोसेस क्या है बाकी आपको मिस गाइडेंस मिलेगी आप उसे लेना चाहते हो तो ले लीजिए आपकी मर्जी है ठीक? या ओके राहुल मेहता सर लेफ्टिनेंट क्या आफ्टर कमीशनिंग अपनी मंथली सैलरी सेव करके 15 लाख की कार खरीद सकता ना आई हैव नो आइडिया बेटा क्योंकि मेरे टाइम में तो 800 रुपए मिलते थे उससे तो कोई कार वार खरीद नहीं सकता था हमारे एक सीईओ के पास कार थी और एक मेजर था वो घर से रही थी उन पे कार थी बाकी किसी पे थी नहीं मैंने तो साइकिल खरीदी थी 2 साल बाद ठीक है दैट्स इट प्रमोद कुमार गॉट सेलेक्टेड एज एन अग्निवीर नॉट अलाउड टू गिव सीडीएस एग्जाम व्हाई शुड दैट बी please do speak to your company commander and CEO. Fine, it should be. It should allow you. Fine, but I'm not aware of the policy position. Fine. Sorry for that. Okay. Rajneesh, I have recently done my BSc. Now I'm preparing for CGL procedure, planning for IIT to do MSc in math, not doing any job, but farming my paddy crop. No problem, yeah. So long as you're engaged in productive work, that's okay. It's your life. No problem. Yeah. How's your first D? क्या हुआ मैं समझा नहीं इसका मतलब फर्स्ट डे इन यूनिट छोड़ो यार आई मीन सम अदर डे टाइम टू चैट एंड ऑल अच्छा प्रियांशु राणा हेलो I take care, God bless. Himanshu, there are ex-assessors at the reports on YouTube who say that TAT story should have main character of your age and gender. I only say that they're talking bakwas. That's it. Simple. Khatam. No arguments. तुम उनको जाके लिख देना कि ऐसे ये कर्नल नेहरू एक है वो ये बोल रहा था लेट देम गिव द रीजंस ओके हिमांशु तोमर सर योर व्यू ऑन ईसीआई एंड वोट चोरी ये बिल्कुल सही बोला राहुल गांधी ने एक चीज सही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एजेंट ऑफ मोदी सरकार दोनों वो है चड्डी बडीज इन करप्शन हाउ कांग्रेस कैन विन इन अ स्टेट एंड लूज इन हाँ ये वोट की चोरी किया बेईमानी किया प्रियंशु राणा सर इसके ऊपर मैं वीडियो डाला है इंस्टाग्राम में भी डाला है ठीक है वो देख लेना आई हैव रिटन आल्सो आंसर्स ऑन दिस सर एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर का गाइडेंस कर दो ये किताब पढ़ लो हमारी प्रियंशु जी बहुत कृपा होगी आपकी पढ़ के समझ लीजिए और नहीं तो हमारा प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक बाकी 4 चीजें हैं हर बार बोलता हूँ एकेडमिक कॉम्पिटेंस अंग्रेजी फिजिकल फिटनेस एंड जीके को सुधार लो सर आपको सुन के लगता है कि एसएसबी इज वेरी इजी सच बात है इजी इजी ओनली कॉम्पिटेंस ठीक ठाक होनी चाहिए दैट्स ऑल सो आई थिंक कुछ
और आगे अंडरस्टैंड सर, डू यू सी राहुल गांधी एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? आई डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस क्रिस्टल गेजिंग एंड ऑल दैट। और मेरे हिसाब से वो ना ही बने प्रधानमंत्री तो अच्छा है। ही कैन गेट समबडी ही इज मोर नाउ, जिसने उसका एथिकल वैल्यूज वगैरह ही सीम्स मोर ऑन द लाइंस ऑफ महात्मा गांधी rather than the usual politicians we have. And that's my personal view. बाकी तो we will decide what it is. Who am I to advise them? अच्छा अच्छा। I'm coming to merit next week. How to meet you? I really want to meet you. आ जाओ, get in touch with योगिता मैडम, नंबर दिया है हमारा वेबसाइट में, you can meet me. Fine. Yeah, welcome. Himanshu, but the thing that these are saying to me, they would have assessed the dossier based on that. तुम छोड़ यार उसको। अच्छा चलो, लेट मी स्पेंड सम टाइम। देख, जो भी, मैं भी असेसर रहा हूँ, सिलेक्शन सिस्टम में जिन्होंने काम किया है वो असेसमेंट जानते हैं। दैट्स अ फैक्ट, अदरवाइज दे वुड बी देयर। बट दिस इज ऑल दे नो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ सिखाया हमको सिलेक्शन सिस्टम ने? आई एम गाइडिंग यू पीपल बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ स्टीफन कवी। स्टीफन कवी की सिखलाई का एसएसबी से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी असेसर को नहीं सिखाया गया। तो जो वो सिखा रहे हैं वो उसका बेसिस क्या है उनसे पूछ लेना। मैं तो अपना बेसिस बता रहा हूं, उनके पास बेसिस है ही नहीं। अब वो एसएसबी प्रोसेस पे फोकस करते हैं ना, विच इज नॉट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई दे आर ऑल गोइंग रॉन्ग इन माय परसेप्शन। दैट राइट? या डोसियर पोसियर उनको ठीक है। अच्छा, बैकअप प्लान इज टू बी पॉलिटिशियन। बहुत बढ़िया, बनो पॉलिटिशियन विद द प्रॉब्लम। ओके, take care of their patients, and I know that work very difficult, but still, how will few words of motivation? मोटिव खुद कर यार, मोटिवेशन मेरे वर्ड से कुछ नहीं होने वाला। ओके सर, डू यू फील इट इज योर बस राइट टू सपोर्ट कांग्रेस बिकॉज संडे इज देयर? नॉट ऑल, आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर। ठीक है ना? तो आई एम यू सी व्हाट हैज हैपेंड हिमांशु, आप लोग बहुत छोटे हैं, आपने दुनिया इतनी नहीं देखी। You know, in normal societies across the world, being critical of the administration is the normal thing of people. मोदी का डंका बजाना, ये 11 साल में बेवकूफी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में क्रिएट किया गया है। ट्रंप का भी वो मागा वाले थोड़े बहुत करते होंगे, बाकी लोग ट्रंप की क्रिटिसाइज ही करते होंगे। जो स्कूल में होते हैं तो हम प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, बाद में लगता है कि नहीं यार, इस प्रिंसिपल में कुछ अच्छी चीजें भी थी। आप टीचर का भी जो सामने होता है, यू क्रिटिसाइज, ये गलत करता है, वो गलत करता है। ठीक है ना? यू नेवर कम्स टू योर माइंड कि यार इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, वो बाद में रियलाइज होता है यार। ठीक है ना? द नॉर्मल थिंग इज वेर एवर यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, हूएवर इज हेडिंग, you are generally critical of that guy. That's a normal setting. ये तुमको ऐसा मूर्ख बना दिया है। यू बैलेंस रिपोर्टिंग मीन कि अगर कुछ उसमें गलत लगा तो कुछ अच्छा भी बताना जरूरी है। बकवास यार, क्या अच्छा है बताना? आई होप यू गेट द पॉइंट। बाकी इफ यू डोंट गेट, आई मीन यू आर द, यू नो, आई मीन हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ तो गोबर भक्त है। इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट, आई मीन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। Fine, that's it. Yeah. Okay. तो हिमांशु भाई, दिस इज माय व्यू। Fine, that's it. Promotion works in forces. छोड़ यार, इस I'll not answer. Enzo, I have a doubt. My TSS is beyond 29th of August. W8 is like, what kind of... अरे देख, 3 चीजों का ध्यान रख। जो लिखता है उसकी जो है मीनिंग ठीक ठाक होना चाहिए, सेंसिबल। ठीक? फॉर एग्जाम्पल, डेथ है, तूने लिखा डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, मरना है सबको जरूरी। फेलियर वर्ड आया, तूने लिखा फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अच्छा, ठीक है, मीनिंग सेंसिबल है। ठीक? तो लाइक दैट यू राइट सेंटेंस। एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट। एंड थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ये एडवाइस दिया है किताबों में, कोचिंग एकेडमी, दैट्स ऑल बुलशिट, इग्नोर ऑल ऑफ इट, इट्स ऑल बकवास। अच्छा सर, आपके
सेवन्थ पे कमीशन नहीं थी और नेक्स्ट ईयर से तो एट्थ पे कमीशन आ जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी सैलरी लेफ्ट हैंड की। चलो भाई बहुत बढ़िया है, गुड। लाइक शुड द सेंटेंस बी ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बड़ी बकवास इन नटराजन ने क्रिएट की है, इग्नोर दैट, बड़ी बकवास। राइटिंग ज्वाइनिंग लेटर वेटर, हाँ ठीक है, तो उस पर कहानी लिख दो यार, कुछ भी। अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर, समाज में एक मुद्दा उठा है कि मेल एंड फीमेल की लिविंग में रहना सही नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, ठीक है ना। पंकु सिंह, सर क्या मैं फर्स्ट ईयर वाले कोर्स के लिए अप्लाई करूं? एससीओ 60 दूंगा जनवरी। हाँ, एक साल के लिए आ जा पंकु भाई, एक साल के लिए आ जा। अंग्रेजी में हेल्प मिलेगी, ठीक। पर एक बात है भाई, देखो पंकु, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, और आपको रिटर्न वर्क भेजना पड़ेगा, ग्रुप एक्टिविटीज में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीजें आप करेंगे तब बात बनेगी। तो डिसिप्लिन लाइफ में चलना पड़ेगा। दीज आर द मेजर थिंग्स फॉर सर्विस एंट्री। तो फिर बात बन जानी चाहिए, एक साल के लिए कर लो जो है ना। अंग्रेजी अंग्रेजी में हेल्पफुल रहेगा। ओके, I think that is about all. Huh? Thanks everybody for attending our session, posting your queries. I only hope that I. अच्छा, some more questions रखूं। आकाश चौधरी, better advice to learn spoken English। ज्यादा बोलो भाई, चलो खत्म। ओके, 18 सर, आई हैव डाउट रिगार्डिंग राइट लॉट ऑफ फैक्ट। अबे लिख दे यार कुछ भी। हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, देयर नथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू अवॉइड ऑल दिस। ये नटराजन ने बकवास क्रिएट की है यार, इग्नोर ऑल दिस नॉनसेंस। Shatrujit, I'm your student. Very good, yeah. Got selected in Ministry of Tribal Affairs, but not getting NOC for SSB. They should give. They should give, yeah. One it is thanking me, most welcome, beta. God bless. कॉल करना मुझे शत्रुजीत, लेट्स हैव अ वर्ड, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ठीक है। Okay, then thanks all of you for attending our session, posting your queries. I only hope that been able to answer your questions adequately. Take care. God bless. Good night. Bye bye.